हेलो स्टूडेंट्स, आपका ये पहला वीडियो है जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो आपको इसमें मैं अलग अलग आइडियली शो करके दिखाऊंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल्स को करने के लिए। अब सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स कर क्यों रहे हैं, हम IPCS में पाइथन का क्या रोल है, क्यों पढ़ रहे हैं उसको। तो वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और हमने ये भी पढ़ लिया कि सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर में, उसी की वजह से सारे हार्डवेयर फंक्शन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। सो व्हाट इज़ अ सॉफ्टवेयर? Software basically is a set of instructions which we write to instruct our computer to run the various hardware. क्योंकि कंप्यूटर का अपना कोई ब्रेन नहीं है, he cannot decide what to do, so you have to write particular code to make it function. For example, if you click on a button, then the function of that button is predefined. आपने उस बटन को क्लिक किया है तो उस बटन के लिए एक फंक्शन पहले से लिखा गया है, वही फंक्शन वो बटन परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई और फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करता। इसी तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन का ले लीजिए या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी हार्डवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं एज अ कैलकुलेटर, as a computing tool, it is instructed by software. तो हम कह सकते हैं कि software is a set of instructions which perform some specific task. इसी तरह से बात करते हैं what is programming language. तो प्रोग्राम लिखा गया है, आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है तो उसका कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब ये भी पता है आपको कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और हमें जो है बाइनरी लैंग्वेज उतनी इजीली समझ नहीं आ सकती है, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो ज़ीरोज़ और वंस के अलावा और कोई कैरेक्टर को रीड नहीं करती है। तो हमें कोड लिखना है और कंप्यूटर को समझना है। तो हम जब कोड लिखते हैं हम बाइनरी में नहीं लिखते, हम कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे, एन ऑर्डर्ड वे ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स। तो आप एक्चुअल में सॉफ्टवेयर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम इसको समझ लेते हैं और मैं आपको वन बाय वन, मैंने आपको कहा था कि आप एनाकोंडा या पाइथन 3 इंस्टॉल कीजिए। तो आई होप यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट इन योर सिस्टम। तो अगर आपने एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल किया है तो इट प्रोवाइड मैनी ऑप्शंस टू राइट कोड। मैं आपको वो सभी ऑप्शंस एक एक करके शो कर दूंगी स्क्रीन पर। दूसरा, अगर आपने पाइथन 3 ही इंस्टॉल किया है तो मैं उसके थ्रू भी आपको कोड बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। After installing Anaconda, you will find these file applications will get installed in your Anaconda folder. So let's start from Anaconda prompt. Then I will take you to Jupyter and Spider also. I am taking Anaconda prompt first. Anaconda prompt will provide you the simplest IDLE which you can use. Just write IDLE in the prompt and wait for the application to get open. Anaconda or you can say Python allows you to write your code in two ways or two modes: scripting mode and interactive mode. So this is the Python shell which is opened after you write IDLE on the Anaconda prompt. This is the Python shell in which
you can write your code in interactive mode. When you find these 3 conical brackets, these are called prompts, Python prompts. On this prompt you can write the code. Any code which you would like, you can write after a prompt is displayed. See, the prompt, again one prompt has been displayed. That means I can write another code here. But if I write simply A, so after writing A, it is not displaying any prompt, it is displaying the value of A, that is 4. This is working in interactive way. You are writing something and it is interacting with you. So this is called interacting mode of writing the code. Now I am displaying A plus B. A plus B will give me 9. Why? Because A contains 4 and B contains 5. So 4 plus 5 will give you 9. This is how you can interactively write your code in Python shell. Second method or the second mode of writing code is scripting mode, which is better than this one. You have to write whole code here, and after writing the complete code you will run it. So I am writing the same code here. In this scripting mode you won't get any prompt displayed. It is simply a notepad file in which you are writing your code. So I am writing the same code. A is equal to 4, B is equal to 5, and if you want to display the sum of A and B, then in this scripting mode you have to use the function print. Inside this function you will write A plus B. Now how to run this program? You can go to run module, or you can just simply click the F5 button on your keyboard. Let's save the file. The name I am giving example, and I am saving it on my desktop. You can see this file has been created here, and the extension of this file is .py. .py extension means it is a Python file, and after saving it has run the code and it has displayed 9 is the output. Output will be displayed on the shell window, not on the script window. So if we can compare these two windows, shell window is the interactive way of writing, and this notepad kind of file in which you are saving your file in .py, it is a scripting kind of writing the code. So these are two modes provided by Python in which you can write your Python code. This was the first way of creating programs. Now second application which is installed in your system after installing Anaconda is Spider. So Spider window will look like this. Left hand side panel is for writing code, and on the right hand side you will find the output. Now let's write the same code here. And it will provide you scripting mode, not interactive mode. You have to write the whole script here, then you will run it. Here also I am printing A plus B. This is the button to run it, or you just click the F5 button. Now wait for the output. Output will be displayed on right hand side window. Let me save the file first. It has been saved. 2 times I clicked the run button, that is why it is showing it 2 times. Now let's again click it here. This is the output it is showing. So it is also a scripting way of writing. You have to write whole code, then you
just click on the run button. It will display the output on the output window. It is also known as console window, where you find the output. This is Spyder. Now let's talk about another application which is installed, that is Jupyter. Open Jupyter, it will look something like this. After doing some working on this window, this is how you will find after opening the Jupyter node. Here you need to create a new file. Python 3 file. So this is the window where you can write your code. And one very important thing which I want to tell you, that in Jupyter you can create many programs on the single window. But in Spyder or other IDLEs, you have to create one program at a time. You have to save it, and for another program you have to open a new window every time. But in Jupyter you can create as many programs as you want under single page. So let's change the name of this file. Here to click on untitled and give the name. Suppose I am giving name example2. So this is the name of my file. Inside this pan you have to write your code. The whole script you have to write here, and after writing the script, just run the program. See, the answer has been displayed here. You can see another input window has been created. You can create second program here. I am creating the same sort of program here, but I am displaying the subtraction result, the difference I want to display. So here you can see it is displaying the difference. Click the window, click the pan for which you want to run the output. Suppose my cursor is in this box, I will run, so it will give me output for this box. And if your cursor is in first box, you will run, the output will be displayed for this box. This is how you can work in Jupyter Notebook. So inside a single window, I can write many programs. I can create more windows inside the single window. So you can create your scripts, as many scripts as you want under single page, under single file. So this is all about various IDLEs or distributions of Anaconda which you can use to perform practicals, and this particular video is only for the introduction of these windows only. I am not taking the practical session today, so you just get yourself comfortable with whichever. It's all for today. Thank you so much. Take care.